Now we will study chemical bonding and molecular structure part 1, ionic bonding. We are studying the chapter of ionic bonding. Now what is ionic bonding? What is ionic bond? The electrostatic force of attraction which holds the oppositely charged ions together is known as ionic bond or electrovalent bond. That you must know. So how does the ionic bond forms? Ionic bond कैसे बनता है? By transference of electrons, complete transference of one or more electrons so that both atoms they acquire complete stable noble gas configuration. There is complete transference of electrons. One will lose and one atom will lose and one atom that will gain electrons, and by this process our ionic bond is formed to acquire the complete stable noble gas configuration. Example of NaCl, ये देखिए Na has 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Electronic configuration Cl has 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Then Na and Cl they will combine. Na it will see it has one extra electron. अगर इसको मैं हटा दूं यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को या इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये क्या होगा? इट विल एक्वायर इट्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड ये जो है ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इट विल एक्वायर इट्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. अगर ये लूज कर ले एक इलेक्ट्रॉन और ये गेन कर ले एक इलेक्ट्रॉन तो दोनों को उनकी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाएगी. सो Na will give its one electron to Cl and Na positive and Cl negative. This kind of ionic structure that is formed or NaCl is formed. Now one thing important in this, इसमें जो एक जरूरी चीज है वो ये है कि the number of electrons gained or lost must be equal so that the atom as a whole is electrically neutral. हमारा जो atom है as a whole वो electrically neutral होना चाहिए. तो number of electrons lost and number of electrons gained they should be same. Now, the number of electrons gained or lost by an atom in the formation of ionic bond is equal to its electrovalency. जितनी उसकी valency होती है, electrovalency होती है, that is the tendency that shows the tendency of an atom to gain or lose electrons. Then, next we have what is electropositive atoms that you must know. Electropositive atoms are which lose electrons and electronegative atoms are those atoms which gain electrons. Then what are the general characteristics of ionic solids? First is the crystalline structure. Then ionic compounds are crystalline in nature. जो ionic compounds हैं they are crystalline in nature and the atoms are arranged in definite geometric pattern. एक definite geometric pattern होता है जिसमें atoms arranged होते हैं and each ion in the crystal is surrounded by definite number of oppositely charged ions. हर एक ion जो होता है वो एक definite number oppositely charged ion से वो surrounded होता है जिसको हम secondary valency भी बोलते हैं atom की. और या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है उसको एटम का. देन सेकंड इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नाउ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनमें क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो व्हाट हैपेंस दीज कंपाउंड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देन नेक्स्ट इज द हार्डनेस. Now ionic compounds are hard. Ionic compounds are hard and rigid. Why they are hard and rigid? Hardness of these compounds increases with decrease in interionic distances and increase with ionic charge for crystals with similar structure. See, as the what happens as their interionic distance जो होता है that decreases, hardness will increase because electrostatic force of attraction that will increase. While अगर इन पे charge ज़्यादा है, if they are more charged, they have high charge on them, then also their hardness will increase because the magnitude of electrostatic forces of attraction वो increase होगा with increase in charge.
फॉर एग्जाम्पल लिथियम क्लोराइड है और एक स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है, उनका स्ट्रक्चर है सिमिलर एंड देयर इंटर आयनिक डिस्टेंसेस दे आर आल्सो सिमिलर, बट फिर भी स्ट्रोंशियम ऑक्साइड जो है दैट इज हार्डर देन लिथियम क्लोराइड. Why is this? Because स्ट्रोंशियम ऑक्साइड पे चार्ज जो होता है वो +2 और -2 है, स्ट्रोंशियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, तो इस पे, और वाई लिथियम क्लोराइड पे +1 चार्ज होता है. तो बिकॉज दे हैव हायर चार्ज, तो दैट इज वाई देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मोर, और जिसकी वजह से दे आर द स्ट्रोंशियम ऑक्साइड इज हार्डर एज कंपेयर टू लिथियम क्लोराइड. Then next we have example of, similarly we have example of NaCl and this calcium sulfide. They also have similar structures and their interionic distance is also same, but again calcium sulfide is harder than sodium chloride because of high charge on ions. Then next we have is brittleness. Now ionic compounds are brittle and can be easily broken. जो ionic compounds होते हैं they are brittle and they can be easily broken. Brittleness का मतलब होता है कि they are hard but can be easily broken. जो चीज hard होती है जैसे glass, वो hard होता है but it breaks easily. So what is the reason? This is the, you can see this is the arrangement of ions in a ionic compound. दिस इज नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन. तो जो सेकेंड लेयर होगी तो उसमें ऑपोजिट आयन होगा, जैसे जो नेगेटिव आयन है उसके कांटेक्ट में ज्यादा जो उसके नजदीक होगा, जो उसके एडजेसेंट होगा, दैट विल बी अ पॉजिटिव आयन. सो व्हाई? बिकॉज जो ऑपोजिट हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. अगर ये सेम आयन्स आ जाएंगे तो द रिपल्शंस विल अकर. बट व्हाट हैपन्स इफ वी अप्लाई फोर्स, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो डिसलोकेट हो जाएगा एंड यू कैन सी पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयन जो आ जाएंगे और एज अ रिजल्ट द स्ट्रक्चर जो है crystals they will shatter due to repulsion. This structure it will collapse. So next we have is the solubility of ionic compounds. Soluble nature of ionic compounds, solubility of ionic compounds. So ionic compounds, they are soluble in water and polar solvents. They are soluble in water and polar solvents having dielectric कांस्टेंट. जैसे वाटर हैज अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और पोलर सॉल्वेंट्स में जिनमें पोलैरिटी होती है, जिनका एक स्पेसिफिक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उन जो लिक्विड्स हैं उनमें सॉल्यूबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर है एक इसका एग्जाम्पल. As water has high dielectric constant, so this decreases the electrostatic force of attraction between the ions. Now dielectric constant that is inversely proportional to electrostatic force of attraction. जितना ज्यादा किसी लिक्विड का dielectric constant होगा उतना ही कम उतनी वो force of attraction को decrease करेगा. ठीक है. So as a result the ions they get separated from each other in solution and move freely. तो क्या होता है, easily जो water में है ions वो separate हो जाते हैं and they are free to move. Now another factor is that water acts as a dipole having positive and negative ends. Water acts as a dipole. इस तरह का एक डाइपोल एक्ट करता है वाटर जिसके पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड है. तो जो आयन, जैसे मान लीजिए आपका ये पॉजिटिव आयन है, तो वाटर इस डाइपोल एक्ट करके वो वाली साइड उसकी तरफ करेगा जो उसकी नेगेटिव है. इस तरह इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर अराउंड द आयन लाइक दिस. और अगर आपका जो नेगेटिव आयन है उसके अराउंड इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. पॉजिटिव डाइपोल वाली जो पॉजिटिव एंड वाला साइन है, आपका जो पार्ट है दैट विल सराउंड योर नेगेटिव आयन. सो इस तरह का एक स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर देगा. ये देखिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर ये अराउंड इसके फॉर्म कर देगा इस तरह का. And so when ionic compound is dissolved in water, positive end of dipole interacts with negative ion. ये देखिए positive end of the dipole that will interact with the negative ion and negative end of the dipole that will interact with the positive ion. So
as a result, the solubility that will become very easy. So, due to strong interactions between ions and the solvent, large amount of energy is released. Due to this large amount of energy is released, this energy released, this is known as the hydration energy. तो इस interaction की वजह से जो energy release होगी, that is called as the hydration energy, and the hydration energy released is greater than the crystal energy which holds the ion, and this hydration energy is more than the crystal energy which holds the ions, and as a result the crystal lattice breaks and ions goes into the solution. इस वजह से क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है और हाइड्रेशन एनर्जी इनफ होती है आपके क्रिस्टल को लैटिस को ब्रेक करने के लिए. क्रिस्टल लैटिस ब्रेक हो जाता है और आयंस मिक्स हो जाते हैं वाटर में. Then next is conduction of electricity. So what happens in solid state, they do not conduct electricity. जो आपके ionic compounds हैं solid state में they will not conduct electricity, but in molten state में क्या होगा, अगर आप इसको melt करते हैं, if you heat them and you melt them, so what will happen, their kinetic energy that will increase, and it increases to such a large extent that they overcome their attractive forces. Electrostatic force of attraction को overcome कर जाते हैं and they become mobile in nature and conduct electricity in molten state. So in molten state they conduct, ionic compounds conduct electricity. And then ionic reactions, they split up into oppositely charged ions in the when dissolved in water. The chemical reactions are called as, yes, ionic reactions. If you dissolve them in water, I told you they are soluble in water क्योंकि water is a polar solvent, तो वहां पे ये अपने ions, respective ions में split हो जाते हैं. And then non-directional character is another feature. Then the ionic bond is non-direction. It doesn't have any proper it doesn't have any direction. The reason is the forces are equally distributed. The forces, the electrostatic force of attraction in ionic bond, they are they are uniformly distributed all around the ion. That is electric field जो generate होता है due to electrostatic force of attraction, that is uniform, और उसकी वजह से they are non-directional. And electric field is non-directional means it is uniform, it is equal on all the sides, it is not directed to a particular direction. Therefore, the ionic bond is non-directional in nature. So this is all about the characteristics of ionic compounds. Thank you.